Hello friends, in one of the interview question was asked how you can have the data coming up here automatically once you change the city from here. From this drop down, you can see that here is the drop down, and once you change the city, you should have the data coming up here automatically in these cells from this data. We do not have to use too much of complex or complicated formulas. So the simple formula we have to use, that would be the filter function, and then we have to select the complete array or the complete table in which we have the data, and we have to freeze all the cells, comma. Then we have to select the city, because we want the city, once we change the city, we should have all the data coming up according to that. Then again we have to freeze that, then equal to this city, whatever we want, and bracket close. So now you can see that all the data has come up according to the New York City. Hello friends, in one of the interview question was asked how to get the total sale of BMW. So instead of doing all these things, 1500 plus then your 800 plus 1100, so that would be taking too much time. Apply this formula, which is sum if. Your range would be all the car name, comma, criteria would be your BMW, comma, and sum of all the sale of all the cars, bracket close, hit the enter. So here the BMW sale is 3400. If you change it to Audi, so that would be 2400. Please subscribe and share for more. हेलो दोस्तों, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हमारे पास ये दो टेबल हैं जिसके अंदर हमारे पास डेटा है। अगर ये टेबल हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 कितने भी टेबल हो, तो आप उनको एक के नीचे एक कैसे डेटा फिल कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग इन सबको ऐसे मैनुअली कर रहे थे, जिनसे कि उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ और वो इंटरव्यू में फेल हो गए। इस काम को सेकंड्स में कंप्लीट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, बी स्टैक। उसके बाद सारे डेटा को सिलेक्ट करें जिसमें कि हमारा डेटा है, कॉमा, दूसरी टेबल का डेटा सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर को प्रेस करें। तो आप देख सकते हो हमारे पास पूरा डेटा आ चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हेलो दोस्तों, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इस डेट के हिसाब से हमें बता सकते हैं कि ये साल का कौन सा वीक है, ये साल का कौन सा हफ्ता है। अगर आप इसको मैनुअली करेंगे, अगर आप इसको उंगलियों पर काउंट करेंगे, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ें और ये वाला फॉर्मूला और ये वाली अमेजिंग ट्रिक यूज़ करें एक्सेल की। ISO, वीक नंबर, डेट को सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर को प्रेस करें। सारे सेल को सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी। आप देख सकते हो हमारे सामने वीक नंबर आ चुके हैं इन डेट के हिसाब से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। Hello friends, in one of the interview question was asked how to separate in-stock item and out-of-stock item. So you can see that on my screen. You have to use one formula, filter function, and here you want all the items, then F4 to freeze that, then the quantity of all the items, F4, and we want all the items whose quantity more than 0 and bracket close. So now you can see that we have all the items who has quantity more than 0. Here we have to find out the out of stock item. We have to use filter function once again, then all the items F4, then quantity of all of the items F4, and here we have to find out all of the items who has 0 quantity and bracket close. Here you can see that. Please subscribe and share for more. So the formula is that index that says that array. So we have to select the complete table in which we have data, comma, then we have to find out the match. So we have to use the match function. What value we are trying to look? So we are trying to look for name value. So we have to select that cell, comma, from where. So we have to select the column in which we have all the names, comma, 0. We are looking for exact match, bracket close. Again, we have to use the match formula. Now we have to find out what we are trying to look. So we are trying to look country, comma. So we have to select all the header in the raw data. Again, 0, exact match 2 times, bracket close. I hit the enter, I would be having the numbers. So Tim belongs to India. Now you drag it down. Hello friends, in one of the interview question was asked how to get the top 5 sale. I have the name and the sale. The formula would be your take function, sort by,
After that, you have to select the complete data range in which we have the data, comma. Then we have to select the sale of all of the employees, comma, -1. We want the top sale in the first place, bracket close, comma, and we want the top 5 people who have the highest sale, 5 bracket close. So now you can see that we have the 5 people who have the highest sale. हेलो दोस्तों, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हमारे पास ये डेटा है नेम, सिटी, सैलरी, बहुत सारे एम्प्लॉयज का। पहले हम नेम लिखेंगे, फिर सिटी लिखेंगे और फिर सैलरी लिखेंगे। तो इससे देख सकते हो आपके पास अगर बहुत सारा डेटा है तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। इसको सेकंड्स में कंप्लीट करने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, इक्वल टू रैप रोज, पूरी डेटा रेंज को सेलेक्ट करें, कॉमा, हमें 3 में डिवाइड करना है तो 3 लिखें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर को प्रेस करें। तो आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। In one of the interview question was asked how to make this attendance tracker automatically instead of doing manual work. So now first of all you have to select all the cells in which you want the data to be coming up, and then you have to go to insert and press the checkbox. So now then we have to go to present column and we have to use one formula which is COUNTIF, and here we have to select all these cells and we have to use true because we want all the student or all the employees who are present 0, and same we have to do it in absent countif formula. Then you have to select these cells, comma, and we have to use false for the absent. So now we have the details and we just simply have to drag it down other columns. And if I select this, you can see that data has been changed, 1 present, 2 present, 3 absent. दोस्तों, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हमारे पास ये लिस्ट है और इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा स्टूडेंट पास है या फेल है, और 33 मार्क्स पासिंग मार्क्स है। तो कुछ लोग इसको ऐसे मैनुअली कर रहे थे, जिससे कि उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ और वो इंटरव्यू में फेल हो गए। तो कुछ नया सीखने के लिए आप ये वाली एक्सेल की ट्रिक यूज़ करें, जिससे कि आपका काम सेकंड्स में कंप्लीट हो जाएगा। इक्वल टू इफ मार्क्स को सेलेक्ट करें, अगर मार्क्स हमारे 33 से ज़्यादा हैं तो हमारा रिजल्ट आई पास, कॉमा, डबल कोट, पास, डबल कोट, कॉमा। अगर कम है तो फेल, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर को प्रेस करें, सारे सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी। तो आप देख सकते हो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। The first formula, what I'm going to do here, I'll just simply copy all the names and put it down in the first way. I would paste. So after pasting that, what I have to do, I have to select the complete, all the names in that, and then press Control H. After pressing the Control H, what I have to do, I have to press the star space and replace with nothing, and then replace all. So now you can see that all the data, all the surnames have been filled out by the first way.